Good cold evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to explore the Metaverse, या यूं कहें कि the exciting world of the Metaverse, a digital frontier where virtual interactions, avatars and immersive experiences are reshaping how we connect. We have Sana Syed with us, जो मेरी दाएं जानिब तशरीफ फरमाए. She will discuss how thoughtful designs and creativity in the Metaverse can enhance user engagement, create more meaningful connections and redefine the future of digital interaction. मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाता जाऊँ. Sana is a designer and academic. She is currently teaching in the communication design department at NCA, that is National College of Arts, Rawalpindi में. She is specializing in the metaverse and virtual interactions, जो आपकी रिसर्च का भी एरिया है और आज इसी पर वो गुफ्तगू करेंगे. Passionate about the future of digital design, Sana actively shares her insights, her findings, her knowledge to inspire dialogue at the intersection of technology, design and human behavior. और आज की गुफ्तगू ज़ाहिर है इसी की कंटिन्यूएशन है. आप लोगों की आमद का शुक्रिया. एक ही रिमाइंडर होता है कि अपने सेल फोन्स जो है वो काइंडली स्विच कर दें टू साइलेंट मोड सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. प्रेजेंटेशन है, उसके बाद हस्बे रवायत हाउस ओपन होगा जिसमें आप भी शरीक हो सकेंगे अपने क्वेश्चंस के साथ, अपने तबसरे के साथ. जस्ट रेज योर हैंड फर्स्ट व्हेन द हाउस इज ओपन फॉर Q&A सो दैट दिस माइक्रोफोन इज गिवन टू यू. इसके बगैर अगर आप अपना सवाल रखेंगे तो वो ऑनलाइन ऑडियंस को समझ नहीं आएगा. सो प्लीज़ वेट जब तक कि आपको माइक्रोफोन दिया जाए. एंड दैट्स इट. नाउ प्लीज़ वेलकम सना सैयद. Thank you. I appreciate you all patiently waiting for this seminar to begin. Well, thank you for a warm welcome and I'm humbled by this introduction. Metaverse, without further waiting, is a virtual world. It's a 3D immersive internet. We've always thought that we could, delve into videos, we could step into TV. बचपन में देखते थे कि TV के अंदर चले जाएं, किसी game के अंदर चले जाएं. So now Metaverse is making this possible. You can actually fully immerse yourself into this environment, which is computer generated, CG generated. So obviously, behind all that is the work of developers, designers, and a lot of teamwork which is required. And then again, it is basically a combination of Web3 and blockchain, and there are a number of things that are interplay जिससे हम metaverse को experience करते हैं. So thank you for joining me today as we delve into the fascinating and rapidly evolving topic, the metaverse and the virtual interaction. As we stand on the brink of a new digital frontier, the metaverse represents a convergence of technology, creativity, social interactions that is shaping how we connect, communicate, and collaborate in our daily lives. So the metaverse is a significant solution in digital experiences. Meta was also launched by Facebook during the pandemic. When I talk about Metaverse, it's not specific to that Meta that is launched by the Facebook group, but Metaverse is an interoperable internet, which means that once you step into this 3D fully immersive internet with help of your virtual reality device, which is VR headset, if you have come across that, or you enter through a website or an application, you can enter the metaverse, which is enabling you to interact with anybody across the globe. Initially हम अपनी IDs बनाते थे, जैसे आपने पैंडेमिक में इंटरेक्ट किया होगा अपने पीयर्स के साथ, अपने सोशल सर्कल में जूम कॉल्स दी होंगी. आपकी IDs हैं, आपकी सोशल प्रेजेंस है, वर्चुअल प्रेजेंस है, बट you're only visible through with help of your camera and the video. With metaverse technology, you can create your avatar, and the game and the overall experience becomes gamified. It's like a game experience. You're given an avatar, you embody that avatar, and you enter into that CGI, computer generated interface or environment, and then you navigate with other peers who are also, dressed up like avatars, impersonated as avatars, and then you engage. So वो एक नया social interaction, एक virtual interaction create होता है, जो कि it's fun as well as experimental and also sort of risky and challenging if you navigate that space. So
वर्चुअल इंटरेक्शंस मेटावर्स में हमेशा रहेंगे, कम्युनिकेशन आपकी रहेगी. इट्स अप टू यू how you intend to use it, how you're using this platform. Educationally, as coming from the education background, I've noticed that metaverse and virtual reality actually aids in enhancing learning. So आपने अगर स्टूडेंट्स को स्पेशली 6 to 12 years of age रिसर्च कहती है कि अगर आपने इस एज ग्रुप में अगर आपने इमर्सिव इन्वायरमेंट के थ्रू या इमर्सिव रियलिटी के थ्रू आपने स्टूडेंट्स को लर्निंग दी है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी कॉन्टेक्स्ट की, सो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है. सो इमर्सिव रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी इज़ बेसिकली लेटिंग यू स्टेप इन टू दैट डोमेन and you are into that screen. You're able to see the cell structures, biology ho, astronomy ho, koi bhi system ho, aap usko you become a small component of that, and then you can learn it very quickly. So metaverse is not just a technology, it is also beneficial for businesses, for marketing. And अब ये यहाँ पर रोल आता है कि डिज़ाइनर्स और यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस कैसे बना रहे हैं. क्योंकि आप और मैं मेटावर्स से फैसिनेट तो हो सकते हैं, लेकिन हमें वो यूज़ नहीं करना आ रहा, हमारी डिवाइस डिपेंडेंसी है या एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ हैं, तो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, हम उसको इंजॉय नहीं कर सकते. Till date, I think metaverse has been linked to virtual reality headgear, कि अगर आपके पास वो डिवाइस है तभी आप मेटावर्स में एंटर हो सकते हैं. सो आई क्लैरिफाई दिस टुडे. यू कैन एंटर द मेटावर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. आप किसी सेल फोन से, आप विद सिंपल सेल फोन्स यू कैन एंटर इनटू द मेटावर्स फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम विद ईज. तो आपको मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट भी करूँगी इससे रिलेटेड. करंटली जैसे आप सब मेटावर्स को नया लर्न कर रहे हैं, ऐसे मैंने भी मेटावर्स से फैसिनेट होकर अपनी एक रिसर्च प्रेजेंट की थी. एंड इन माय एमएस प्रोग्राम, एंड माय मेटावर्स रिसर्च इज़ लिंक्ड टू मेटावर्स environments, how designers can create comfortable and user-friendly environments, fully immersive environments which can entertain larger audiences. जिसमें सिर्फ एक या दो नहीं, 20, 25, 50 persons, 50 avatars from all across the globe can enter that space, and they can interact, they can shop, they can communicate. You can hold events, musical events, you can hold lectures, seminars, conferences, whatever. Possibilities are endless. So I created that environment, and I took some मतलब मैंने कुछ रिसर्च की, मैंने कुछ टेस्ट किए, सैम्पल्स किए, जिससे मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में उतना गैप नहीं है जितना हम सोच रहे थे. अडॉप्शन रिलेटेड चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे थे, एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे, पाकिस्तानी ऑडियंस, पाकिस्तानी यूथ इज़ रियली इनटू इट, और वो बहुत जल्दी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं. सो फ्रॉम ईयर 2020, फ्रॉम वेयर जब हम यहाँ पे मेन स्ट्रीम मेटावर्स टर्म को देख रहे हैं, 2020 से 2022 से 2024 तक इतनी सैचुरेशन हुई है इस ट्रेंड में दैट यू विल बी सीइंग मल्टीपल institutions, game designers and various other organizations experimenting with metaverse. So कहने में आता था कि metaverse is just a hype, it's a trend, आया गया चला गया, इसको कौन पूछता है. But that's not the case. It's a technology which is highly functional in every industry, I believe. And if you step out of this domain, पाकिस्तान से आप निकलते हैं तो बाहर internationally आपको जैसे AI जो है वो दिख रहा है कि हर फील्ड में वो आपको AI का you have traces of AI contributing to that. इसी तरह metaverse and virtual reality and fully immersive reality is going to impact our lives and social interactions in the future and in the current times as well. So getting into what metaverse is basically, metaverse is basically a combination of two realities, which is virtual reality and augmented reality. So virtual reality is basically something that is dependent on the device mostly. So you need to have, it's a device mediated experience. मीडिया को कहते थे ना कि आप स्क्रीन के थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं, अब फुली इमर्सिव ये है कि आप उस स्क्रीन के अंदर चले गए हैं. सो फुली मीडिएटेड एक्सपीरियंस या डिवाइस डिपेंडेंसी आपकी virtual reality के साथ रहेगी. Augmented reality again is dependent, but it's not a fully immersive experience. All right. So it's a second slide. Sorry, it's the third slide. So augmented reality is basically when you are using your phone, but you are present in this world and you can impose certain images, certain, you can say 3D,
3D objects in your space. So augmented reality is very easily available. आप अपने Snapchat filters देख सकते हैं, इससे आप अपने कोई भी अपनी कोई designs या कोई जैसे IKEA है या डिफरेंट और कहते हैं उन्होंने बिजनेस और मार्केटिंग के लिए उन्होंने अपने जो डिज़ाइंस हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू ऑडियंस तक प्रेजेंट किए हैं. आप अपने अपने लिविंग स्पेस में, अपने लिविंग रूम में उनके सोफ़ाज, उनके कोई भी जो आप प्रोडक्ट से इंस्पायर हो रहे हैं, यू कैन एक्चुअली पोजिशन देम इन योर ओन स्पेस, एंड दैट इज़ विद हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी इज़ व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू दिस स्पेस. So we see a cultural shift. We see a cultural shift when we talk about fully immersive world, we talk about fully immersive internet. So the metaverse represents a significant cultural shift, merging digital and physical realities into a hybrid space. Why hybrid? Because you're physically present in here and you're also navigating in a CG environment, in an immersive environment. So the first thing that the user experience, I would call it user because when I'm using virtual reality headset, I become a user. And the first thing that I experience is enticing proprioceptive response. Proprioceptive response क्या है? आप जब आप किसी नए इन्वायरमेंट में जाते हैं, किसी योर सेंसेशंस आर हाइटेंड, ठीक है, उसमें यह है कि आपका बॉडी बैलेंस शिफ्ट होता है. इंसान का जो एक आपकी सेंसेस हैं उसमें सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले देखते हो आपके नीचे ज़मीन है, कितनी है, कितना वेट है, यू सेंस दीज थिंग्स. सो प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस को वर्चुअल रियलिटी सॉर्ट ऑफ शिफ्ट करती है, चैलेंज करती है. इट्स इंटाइसिंग इन सेंस द मोमेंट आई स्टार्ट पुट ऑन दिस VR headset, it is it's a very exciting and highly pleasurable experience for viewers कि आपको लगता है आप एकदम किसी दुनिया में चले गए हो. And for that that experience actually gives you a weight shift. आपको it is hard to put it in words, but then you will feel sensory feel आप करोगे कि आप CG environment में हो लेकिन physically आप अपने couch पर ही होगे. So that sense, that difference creates this wow factor. So whenever you try on आप किसी भी environment को experience करें जो कि virtual environment है, with help of a VR headset, मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसकी जो प्लेजर वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा है कि पीपल फॉरगेट कि वो कहाँ गए हैं, वो उसी से दे मूव टू दैट स्पेस, वो उसी से बहुत एंटरटेन हो जाते हैं. सो क्रिएटिंग सच एक्सपीरियंसेस इन मार्केटिंग स्पेशली रियली हेल्प्स. क्या कहना चाहिए, आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में वो बहुत उसको एड करता है, हेल्प करता है. एंड देन वंस इट बिकम्स मोर प्लेजरेबल, पीपल आर बाउंड टू गो बैक एंड एक्सपीरियंस दैट ओवर एंड ओवर अगेन. सो कल्चरल शिफ्ट में जब हम जाते हैं तो एक चीज़ जो बहुत क्लियरली नज़र आती है वो ये कि देयर इज़ आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन. व्हेन यू आर मीडिएटिंग इन द मेटावर्स, आप अगर सेल फोन डिवाइस के थ्रू आ रहे हैं तो आपका एक एवटार बनेगा और उस एवटार को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसको आप अनरियलिस्टिक बना सकते हैं. अभी हम जिस जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम तो मिलेनियल्स हैं, पर हमारे बाद जो आ रहे हैं दे आर वेरी experimental with their identities. They want to explore, they want to be labeled with various pronouns as well. तो आप देखेंगे कि उनके लिए avatar experience is more fun as compared to just delving into that space with head VR sets. लेकिन जब आप VR device के साथ enter होते metaverse में, then you can't see yourself as an avatar. Maybe other avatars can see you and interact with you. So with my research, I've learned कि अगर आप अपनी cell phone devices से enter हो रहे हैं with in an immersive environment as avatars, आपका social interaction और भी ज़्यादा pleasurable है because it becomes more of a game experience. And the good thing about metaverse is that there is no storyline. There are no क्या कहना चाहिए, आपके कोई rewards या कोई ऐसा you're not restricted to this scripted game कि आपने यही सब कुछ करना है. So you are free to do as much as and explore as much as you want, and the social interactions become way more pleasurable. And in here I've noticed that it gives you all the opportunities to be anything and anyone you want to be in the metaverse. So escapist जो है यहाँ बैठे हुए उनके लिए बहुत मज़ेदार experience होता है. And I think metaverse is some experience which really gives you the sort of comfort and escapism जो कि शायद हम गेमिंग के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन अब वो गेमिंग लोड हमारे ऊपर नहीं है. उसके अलावा भी हम नॉर्मल लाइफ में भी उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. So identity and self-expression is again it's
becoming more creative and customizable. Then we see cultural engagement. The metaverse redefines cultural consumption and production, enabling users to become co-creators of content. Media usually create किया जाता था और हम सिर्फ मीडिया को बैठ के देख सकते थे. अब आप मीडिया especially in this context co-create कर सकते हैं. आप भी, मैं भी, हम सब वहाँ पर अपने environments create कर सकते हैं. आप भी meeting hold कर सकते हैं, आप audiences बुला सकते हैं. There is no restriction that you just have to be an audience, you become a co-creator. So the aspects of metaverse encourages users to embrace their uniqueness and fostering a more inclusive environment. So this sort of media is decentralized basically. Centralized यानी कि हमारी एक media body है, वही authority है, वही gatekeeping पर है, वो नहीं हो रहा. अब आप भी creators हैं और आप भी अपना content create करके वैसा ही metaverse create कर सकते हैं. उतनी ही possibilities हैं आपके पास जिस तरह किसी एक बड़ी firm के पास या organization के पास हैं जो कि ज़्यादा authority या they have more hold over the public. Then we have economic revolution. Economic interactions are evolving as digital goods gain value and new marketplaces emerge, reshaping concepts of ownership and community. NFT के बारे में सुना होगा आपने? NFT is non-fungible token. आप जब Metaverse में या Web3 में अगर कोई asset acquire करते हैं तो वो आपके साथ forever signed है. वो asset आप trace कर सकते हैं. यानी अगर आपने कोई artwork buy किया है या कोई valuable चीज़ आपने buy की है, it is signed by to your name and it can be traced back to the first owner. तो अगर आप उसको आगे ownership जिस तरह हम कहते थे creative content की, anybody can copy that. जैसे हमारा इससे पहले जो internet में जो आपका ज़्यादा कल्चर था वो कॉपी पेस्ट कल्चर था. यू कैन कॉपी एनीथिंग एंड देन यू कैन क्लेम दैट इट्स योर्स. बट इन Web3 you have it's easily traceable and you have full control over your content. So it gives you sort of ownership which is unique and it is also part of blockchain. जो ये मैंने आपको बताया ये blockchain का system है और ये पाकिस्तान में भी blockchain नहीं है but all across the globe blockchain is pretty functional and this system is pretty operable. Then we talk about cultural heritage, which is the metaverse also offers innovative ways to engage with cultural heritage, enhancing appreciation for history while raising questions about digital preservation. This engagement allows users to experience and interact with historical context in immersive ways. हम हिस्टोरिक साइट्स विजिट करना चाहते हैं लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते या हमारे पास टाइम नहीं है. बट विद हेल्प ऑफ दिस VR एंड इमर्सिव डिवाइसेस हम वो पूरा इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स. Then I talk about business applications. So Metaverse offers diverse business applications including immersive training environments, virtual storefronts, and enhanced customer engagement through interactive experiences. Companies across various sectors such as education, healthcare, and retail are leveraging these opportunities to innovate and transform their operations, driving efficiency and new revenue streams. So if you're taking use of this immersive technology and virtual reality, you can actually explore new revenue streams, a new marketplace, because Metaverse is also labeled as a new marketplace and a community जो कि वहाँ पे आप अपनी और communities create करके आप कोई भी product चाहे market करें या आप उसको launch करें तो उसकी possibilities endless हैं. So coming back to the research that I got into, I explored how fashion can be explored in the metaverse. Coming from a fashion background, in a sense कि हमारी जो garment making है, हमारी जो textile industry है, वो बहुत wastage create करती है basically. So I'm going to talk about touch upon the sustainability aspect here as well. हमारी जो textile waste है, जो हमारी coming from a textile country, आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत लार्ज है और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है. जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक डेनिम क्रिएट करने के लिए 70 गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट करती है. सो क्रिएटिंग जस्ट वन क्या कहना चाहिए एक गारमेंट जो आप बना रहे हैं, एक स्टाइल कर रहे हैं, उसके लिए आपके रिसोर्सेज कितने डिप्लीट हो रहे हैं. बट विद हेल्प ऑफ डिजिटल फैशन वेयर यू कैन यूज सॉफ्टवेयर्स, यू कैन मार्केट इट इन
in through these devices so in immersive way आप वो wastage रोक सकते हैं. So my research was basically revolving around making fashion more digital and then presenting it in a virtual environment where people can interact and virtually try it on as well, or perhaps a new customer experience is created. So the metaverse is an emerging marketplace that is set to transform our digital experience and customer and consumer behavior. Recent projections indicate that the metaverse marketplace is expected to grow from 7.1 billion in 2023 to astounding 89.6 billion by 2032. This remarkable growth reflects a significant shift in how we engage with digital environments, particularly in sectors like fashion and retail, where the importance of immersive experiences is becoming increasingly evident. So at the heart of this is digital fashion. Digital fashion मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, but then again there were issues कि हम उसको कैसे create करें, हम users तक कैसे पहुँचाएं, वो एक digital वो pixel garment है, हम उसको पहनें कैसे, there was all these questions. But then again, when you can virtually apply a filter on you, Snapchat पे आप देख सकते हैं, तो इसी तरह आप अपना virtual garment भी अपने ऊपर apply करके देख सकते हैं. You can have a virtual try on before deciding on if this works for you or not. इसी तरह की वर्चुअल AR ये ऑगमेंटेड रियलिटी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ. जब आप वर्चुअल ट्राई ऑन की बात करें, दिस इज़ प्रिटी मच इन प्रैक्टिस इन मेकअप इंडस्ट्री, दिस इज़ प्रिटी मच इन प्रैक्टिस इन एक्सेसरी इंडस्ट्री एज वेल. आपकी क्लासेस है, आप उसको वर्चुअली ट्राई ऑन कर सकते हैं, एंड दिस इज़ बिकमिंग अ न्यू मार्केटिंग टूल. So metaverse is not just linked to Web3. These technologies are also intersecting with how we are engaging, how we are shopping at this point in time. जो आपके e-commerce है वो भी transform हो चुका है. The design of these immersive spaces emphasize user-centric approaches. अब again ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए यूज़र को समझना है. यूज़र कितना एजुकेटेड है, कितना डिवाइस को वो समझता है, उसकी डिवाइस एक्सेप्टेंस कितनी है. सो यूज़र रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन वी टॉक अबाउट यूज़र इंटरफेस. यूज़र इंटरफेस इज़ समथिंग जो आप जैसे मोबाइल पे आप देखते हैं कि उसमें आपने कहाँ क्लिक करना है, कैसे नेविगेट करना है. तो यूज़र इंटरफेस तो हम कहीं ना कहीं समझ गए, लेकिन जब आप वर्चुअल रियलिटी में जाते हैं तो यूज़र इंटरफेस ख़त्म हो जाता है. यू आर इन द स्क्रीन, सो यू आर मूविंग विद योर आप अपनी सेंसेस के साथ अपने विद द स्वाइप ऑफ योर हैंड, तो इस तरह आप नेविगेट कर रहे हैं. तो वहाँ के यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए, वहाँ आपका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए. दोज वर द चैलेंजिंग क्वेश्चंस दैट आई वाज लुकिंग इनटू व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन फैशन इन द मेटावर्स एंड हाउ मेटावर्स इज एक्चुअली अ फंक्शनल मार्केट प्लेस फॉर फ्यूचर. Then again, it turned out to be a successful research. मैं आपको अपना मेटावर्स एम्पोरियम दिखाऊंगी जो कि मैंने क्रिएट किया. एक मेटावर्स एक्सपीरियंस है जो कि आप अपने सेलफोन डिवाइसेस से भी देख सकते हैं, आप VR हेडसेट के थ्रू भी देख सकते हैं, और आप वहाँ पे अपने फ्रेंड्स को बुलाकर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं. उसको भी हम स्टडी करेंगे. जस्ट अ क्विक रिव्यू, बट देयर आर चैलेंजेस दैट वी फेस. अगेन पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम लाने के लिए हमें ब्लॉकचेन का होना बहुत ज़रूरी है. ब्लॉकचेन के बगैर भी हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम दैट इंटरनेट, फ्रॉम दैट सोर्स, तो आपको ब्लॉकचेन के थ्रू ही बाय करना है. आपका डिजिटल वॉलेट होना चाहिए, डिजिटल करेंसी होनी चाहिए. आपने वर्चुअली ट्राई ऑन कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ब्लॉकचेन का होना ज़रूरी है. सो वन ऑफ द प्राइमरी टेक्निकल चैलेंजेस इज़ द नीड फॉर एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इमर्सिव एक्सपीरियंसेस. द मेटावर्स रिलाइज हेविली ऑन high-speed internet, powerful computing resources, and sophisticated software platforms. Many users, especially in rural or underdeveloped areas, may lack access to necessary technology, which can limit participation and engagement in the metaverse. Additionally, the interoperability of different metaverse platforms remain a concern, as users may find it difficult to navigate between various virtual environments without a seamless experience. Interoperability क्या है? इंटरनेट पे हम वेबसाइट्स देखते थे और एक वेबसाइट क्लोज करके आप दूसरी वेबसाइट को भी देख सकते थे. ये ऐसा इंटरनेट है जिसमें आप समझ लीजिए वेरियस वर्ड्स आर इंटरऑपरेबल. आप टेलीपोर्ट कर रहे हैं एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स पे, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर.
एक वर्चुअल लैंडस्केप से दूसरे वर्चुअल लैंडस्केप पे. सो इंटरऑपरेबिलिटी इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ दिस मेटावर्स, जो कि जैसे आप गेमिंग में भी आप यू लॉक इन दैट एनवायरनमेंट. आई बिलीव गेमिंग इज वेरी रिस्ट्रिक्टिंग. आई थिंक फॉर मी I like more liberated environments. I think I'm more free spirited. I want more possibilities, not just the scripted thing that the player has to go through. So metaverse has endless interoperability access points. आप उस जब आप metaverse खुद से create कर रहे हैं, आप multiple metaverses जो कि multiple worlds हैं, virtual worlds हैं, उसमें आप अपने linkages दे सकते हैं. With the click of a button you teleport from one world to another. Being a teacher, मैंने अपने students पर ये exercise किया, so they were totally fascinated कि हम कहाँ हैं मैम, हम कहाँ हैं, हमें बताएं, which world is this. So it's endless. There is no stop to it. आप कितने भी metaverse आगे explore करते जाइए. So this again is a creator economy. जितने create होंगे metaverses, environments जितने create होंगे, उतना ही expand करेगा, और जितना expand करेगा उतना challenging भी है, risky भी है. And again you need a fast internet to actually process all the rich environments जो कि जिस तरह भी उन्होंने उनको render किया है उसको enjoy करने के लिए. Then again, we have economic barriers. Economic barriers also play a crucial role in the slow adoption of the metaverse. The cost associated with developing and maintaining metaverse applications can be prohibitive for many businesses. Companies must invest in new technologies, training, and content creation, which can strain resources, particularly for small and medium-sized enterprises. Furthermore, the uncertainty surrounding the return on investment in metaverse initiatives can deter businesses from fully committing to the new frontier. So you can't, I believe there are some challenges still, but we are trying to overcome that. And you can bridge that one after the other. कोई भी industry जब उसको link करती है तो multiple industries साथ वैसे ही उसके साथ connected होती हैं. So I think the future is immersive, and if you explore the possibilities, then it can definitely help you in any domain that you're working in, and it can make it more heightened and pleasurable experience for users. Social factors including user acceptance and understanding. यूज़र एक्सेप्टेंस, जैसे कि अगर आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट की बात करते हैं, तो मैंने जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो यूज़र्स कहते थे कि ये बड़ा हैवी है, इसको हम ज़्यादा देर तक एंड्योर नहीं कर सकते. हेडसेट आप कैसे पहन के फिरें, यू बिकम ब्लाइंड बिकॉज यू डोंट वांट टू जस्ट बी इन दैट इमर्सिव एनवायरनमेंट 24/7. एंड दोज हु हैव बीन इन दैट एनवायरनमेंट, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, दे एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल चेंजेस जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि डेंजरस है हेल्थ के लिए. सो आप फुली हेडसेट के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते. बट येस, द 360 environment, fully immersive environment from your screen is more supportive. जितने भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए, जितने यूजर्स का जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि दे आर मोर कंफर्टेबल विद हेल्प ऑफ अ मीडिएटेड डिवाइस, नॉट फुली इमर्सिव एक्सपीरियंस. बट देन अगेन देखते हैं एक्सेप्टेंस उसकी कैसे और इंक्रीज की जा सकती है. बट इन पाकिस्तान the trend, it's not just a trend, market is adopting this or this metaverse technology. और मेरे साथ ही बहुत से और भी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने metaverse को as a marketplace recommend किया, और बहुत से ऐसे businesses हैं जिनको हम metaverse marketing के through मज़ीद और enhance कर सकते हैं. And then there are privacy issues, then there are security issues, and then there are potential for addiction to virtual environments. जो escapist हैं वो उसी दुनिया में रहना चाहेंगे because everything is possible. And then again there are psychological concerns related to that. Educationally, Metaverse, going to another topic though, educationally Metaverse बहुत beneficial रहा है. और Metaverse platforms हैं एक जिनके ऊपर experiment किया है. classroom environment बहुत अच्छा रहा है. Metaverse के through जब आप educate कर रहे हैं उसका experience बहुत अच्छा रहा है. So I think for a short amount of time users are adopting to this, but not like a complete lifestyle. That is going to take some time, maybe 10 years from now or 5 years from now हम इसको अपनी lifestyle का हिस्सा देखेंगे शायद. So individuals may be hesitant to adopt new technologies. In summary, the challenges of metaverse adoption encompass a range of technical, economic, and social issues that must be addressed to facilitate broader acceptance and integration into daily life. Overcoming these obstacles will require collaboration among technology developers, businesses, and users to create a more inclusive and accessible metaverse experience. एक और मज़ेदार बात यह है कि जो आपका एवटार है दैट्स लिविंग फॉर एवर.
So if you want eternity, create an avatar. It will be navigating in that metaverse space forever. And if you want, life after life, तो आपका avatar हमेशा जिंदा रहेगा. And those metaverse developers were actually keen on developing metaverse because they wanted to have, life forever. So metaverse is a unique experience for different users. आप उसको eternity forever life के साथ भी उसको link कर सकते हैं. Then again, there are ethical concerns. एथिकल कंसर्न्स ये है कि देर इज़ लिटिल चेक, इसकी पॉलिसीज़ नहीं बनी, रेगुलेशन अभी नहीं है, और उसको कैसे मॉनिटर करना है. देर इज़ डार्क वेब एज़ वेल. बहुत सारी चीज़ें इसको रिस्की बनाती हैं अगर आप इसको कम्प्लीटली अनचेक्ड और अनकंट्रोल रखेंगे. सो वी डोंट नो येट कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ या उसके जो आपको बैरियर्स हैं या जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं वो हम मीट कर सकेंगे या नहीं. सो यूज़र एक्सेप्टेंस, रेगुलेटरी चैलेंजेस, एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड. आपको मेटावर्स में एंटर होने से पहले आपको पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, आपको ट्रेन करना चाहिए यूज़र्स को, और उनको एक सर्टन आई बिलीव एक टाइम फ्रेम के साथ उसको मेटावर्स को मेटावर्स के साथ इंगेज करना चाहिए या इमर्सिव टेक्नोलॉजी के साथ इंगेज करना चाहिए. सो आई थिंक in summary, overcoming these challenges is essential for metaverse to reach its full potential to become an integral part of everyday life. Coming to an end, the metaverse is a significant evolution in digital experiences characterized by virtual worlds, augmented reality, a persistent universe, interoperability, user-generated content, and an economy with digital currencies and virtual goods, enabling social interactions and community focus. So this is the overview जो मैं एक जल्दी से wrap up कर सकी. I do have the metaverse experience that I created, if they may play. मेटा एक फेसबुक के थ्रू भी था, और जो मेटावर्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो एक और प्लेटफॉर्म है. इट्स कॉल्ड spatial.io. spatial.io आप अपनी सेलफोन डिवाइस से भी एक्सेस कर सकते हैं. इसमें आप वेरियस इन्वायरमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं. दिस वाज एन एम्प्टी स्पेस जिसमें मैंने एक वर्चुअल मर्चेंडाइज क्रिएट किया है डिजिटल फैशन को एक्सपीरियंस करने के लिए और पाकिस्तानी फैशन को ग्लोबल बनाने के लिए. सो यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ मार्केटिंग पॉसिबिलिटीज़. अगेन इफ़ यू मूव द कैरेक्टर, द एवटार, you can see that there are multiple इसको थोड़ा सा नेविगेट कीजिए आगे. वो जो सर्कल बने हुए हैं उसमें अगर आप एंटर होने की कोशिश करें, कोई भी सर्कल आपको नज़र आता है. देर आर पोर्टल्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ. ये आगे पोर्टल्स हैं, सर्कल्स जो बने हुए, दीज आर पोर्टल्स. सो इन माई मेटावर्स विच इज़ santex.io. सो यहाँ पे ये पोर्टल्स हैं. इस पोर्टल में जब आप एंटर होते हैं तो आप एक और मेटावर्स में चले जाते हैं. और ये मेटावर्स मैंने नहीं क्रिएट किए, ये आगे और क्रिएटर्स ने क्रिएट किए, बट दीज आर लाइक डायनामिक एंड फुल ऑफ क्या कहना चाहिए, आप जितना डिस्कवर करना चाहें वो देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़. इसमें एंटर कीजिए, आप एंटर हो सकते हैं. यू कैन जंप इन टू इट. Press F. Yes, we want to travel. So this is another metaverse space, fully immersive space. VR से भी enter हो सकते हैं, अपने वेब पेज से भी आप enter हो सकते हैं. ये वेब पेज के थ्रू enter हो रहे हैं, आप सेल फोन से भी enter हो सकते हैं. And you can co-create. आपके जो यूज़र्स हैं वो आके आपके साथ इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं स्पेस को, और ख़राब भी कर सकते हैं आपकी स्पेस को. सो इट्स अप टू यू, अगर आप इसको जितना भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहें. इस पर कॉन्फ्रेंसेस सेट हुई हैं, मीटिंग्स अरेंज हुई हैं. इन्वायरमेंट्स के ऊपर आप कैसे उसको सेट करते हैं. सो दिस इज़ अ डिफरेंट मेटावर्स. ये उन्होंने अपने कस्टमाइज़ किया हुआ है एज़ पर देयर प्रेफरेंसेस. Maybe we can go back and see another portal. We have to find the same, yeah. रास्ता भूल जाए आपको, दोबारा ढूंढना है, या maybe you can press the back button. Maybe we can try that. आप बैक कर लीजिए, आप वापस उसी में पहुंच जाएंगे जो आपका होम पेज है या होम एनवायरनमेंट है. Yes, so
बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें मल्टीपल मेटावर्सेस हैं, मेटावर्स के इवेंट्स हैं, बहुत से आपके सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने इसमें अपने लैंड बाय किए हुए हैं और दे आर क्रिएटिंग गेम्स फॉर देम। आप उनको मल्टीपल यूज़र एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे ये स्पेस जो है जो मैंने डिज़ाइन किया है, इसको बैक कर लें बेशक, बैक कर लें। यूज़र यूज़र क्या कहना चाहिए, वेब पेज को बैक कर लीजिए। तो दिस इज़ माई एम्पोरियम। इसमें देयर आर एंडलेस ऑप्शंस, आप उसको देख सकते हैं, आप खुद भी जा सकते हैं। आई विल शेयर अ लिंक और अपना भी क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। सो दिस इज antex.io, spatial.io. Spatial.io, spatial, spatial.io. जी, .com की जगह आप समझिए .io. दिस इज़ ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली 2.5D, जिसके अंदर आप ये 3D जो एसेट्स हैं वो पूरे क्रिएट करते हैं। आप किसी और मेटावर्स में एंटर हो सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं, इसमें भी आप नेविगेट कर सकते हैं। दिस रूम कैन होल्ड अबाउट 20-25 avatars. या सो हमारे पास ब्लॉकचेन होती तो ऐड टू कार्ट भी हो सकता था, लेकिन अभी ऐड टू कार्ट नहीं हो सकता, बट वी कैन मार्केट नॉनदलेस। दिस इज़ सेपरेट फ्रॉम फेसबुक। फेसबुक का अपना मेटावर्स है, वो डिफरेंट है, और ये spatial.io एक अपना मेटावर्स प्लेटफॉर्म है, वेब पेज है, जिससे आप अपने खुद भी मेटावर्सेस क्रिएट करते हैं और डिज़ाइन भी कर सकते हैं। Any questions? A lot of questions. बताइए। Hello. I have a जी। question. I'm using this app. मेरा जो room है वो बहुत छोटा है. So how can buy a big room or a big house? I think there are templates available and you can select one. मैंने जो template use किया था उसमें आप it's basically this emporium is क्या नाम है, it's placed on water, जो it's challenging reality. तो मुझे एक इतनी स्पेस चाहिए थी जिस पे मैं it's I can have multiple wings to that space. लेकिन आप उसमें ऑप्शंस हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। spatial.io में कॉन्फ्रेंस रूम है, क्लास रूम है, ऑडिटोरियम है, कोई भी स्पेस आप क्रिएट कर सकते हैं। उसको आपने कस्टमाइज़ करना है एज़ पर योर प्रेफरेंसेस। इनके अपने भी रेडीली अवेलेबल कुछ एसेट्स होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मे बी आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए हो, बट यू कैन डिज़ाइन एंड रीडिज़ाइन एंड मेक इट मोर क्या कहना चाहिए, एंगेजिंग फॉर यू। यस। Lovely. I don't think this is something very new to the world or to the Pakistan or to anyone. True. It is absolute in the world, and I really appreciate your hard work. But the thing is, as you said, but to me, first I'll pass on the comment and then I'll ask the question. My name is Saima Batul and I write for Science and Technology. So I'll just discuss a few things. Pakistan, right? There's no PayPal. As you say, create the business. They create the business. How they get payment, all of them. They get excitement, then they get frustration, and then, you know what, I don't want to say what. Third thing is wastage of time, because you recently have heard what happened in Chicago. 15 hours, habitual boy has suicidal about the chatbot. And good to know another evil for the Pakistani boys. I'm sorry, I'm going to use the very negative word. Why? Because we live in a country जहाँ पे आपका WhatsApp भी काम नहीं कर रहा होता। हम ऐसे मुल्क में रहते हैं, तो इससे मैं ये कहना चाहूँगी कि तख़य्युल की दुनिया बहुत हसीन है। ये जो तख़य्युल है और इसको ये नई लॉट को आप समझा रही हैं कि ये बड़ी नई चीज़ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको अपना एक तजर्बा बताती हूँ। आज से कोई तकरीबन 7 साल पहले मैंने यही मशीन लेके
तो मुझे शदीद पाकिस्तान में गर्मी लगी, तो मैंने एक स्नो साइट खोल ली। तो मैंने देखा कि शुड आई फील, बिकॉज आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम अ पर्सन, बट वो जो क्लेम है कि वो बड़ी न्यूरोटिकल चेंज कर लाता है, ये साइकोलॉजिकल, आई यू स्टार्ट फीलिंग वट एवर, लेट मी टेल यू, मैंने उसको ना एक स्नोई साइट करके, तो आई वो वेयर दैट ईवल, तो to be very honest, I got nothing but the sweat. I got nothing but the headache. So ये जो नई options आप बता रही हैं, maybe in the future might be, but at the moment what we see here is all the dark. Thank you for discussing the dark areas of the machine. But in this country, again talking of Pakistan, यहाँ पे इस किस्म की वैल्यूज़, जिस तरह आपने कल्चरल और इकोनॉमिकल डिस्कशंस की हैं, दोनों बहुत पुअरेस्ट हुई हैं, और वो इंटरनेट का बड़ा कारफरमाई है उसमें. नाउ द क्वेश्चन इज, you have something which you think it's going to facilitate you. You have something जो आप कहते हैं कि ये चाकू है, इससे मैंने सेब काटना है, लेकिन उसी चाकू से फिर आप सर भी काट लेते हैं और अपना हाथ भी काट लेते हैं. तो ये जो कुछ आपने यहाँ पे दिखाया, ये वर्चुअल रूम्स, एंड दैट्स नथिंग न्यू बाय द वे, कुछ भी यहाँ मैंने कुछ नया नहीं देखा. तो ये जो टामक टोइयाँ हैं, ये जो भूल भलैयाँ हैं, क्या पाकिस्तानी ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं या मज़ीद बच्चे हैं, आप पाकिस्तान में जहाँ साइबर क्राइम लॉज ही नहीं है, जहाँ पे साइबर कोर्ट्स नहीं है, जहाँ पे FIA हैंडल करता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन is handling the cyber crimes, जहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है कि साइबर क्राइम होता क्या है. साइबर बुलिंग में इंटिमिडेशन में फ़र्क का कोई पता नहीं. ज़बान की इतनी मार है कि हिब्रू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी सब मिक्स करके, तो इसका जो है पास्कल इंट्रोड्यूस, यू नो दैट पास्कल कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है. सो इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात में व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस डैम थिंग? It's a big question, and I think I won't be the only one answering this. It's a question directed to a larger audience, I believe. As an educator, मेरी responsibility है, और मैं influence करती हूँ, मेरी बात influence करती है youth को, वो सुनते हैं, तो मेरी responsibility है कि मैं उनको productive, constructive और creative avenues दूँ, जिसमें वो create कर सकें, जिसमें वो अपनी they can channel their energies. तो coming from that background, हम तो art background से, हम तो बड़े peace lovers हैं. But if we talk about the overall, the yes. But then there are a lot of, I think there are a lot of collaborations going on in here. जब मैंने Metaverse पे research की, मुझे बहुत backlash मिला, मुझे बहुत लोगों ने snap किया, बहुत restrictions थी. But then I spoke to the those creators, those developers who've been part of larger industries, and they said, go ahead, keep it going. Speak to those who are working in other countries. And I learned कि स्टार्ट करना है, किसी एक को स्टार्ट करना है, और उसको ये टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बी द पायनियर. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि 1.5 साल मेरी रिसर्च को क्वेश्चन करने के बाद, व्हेन आई ग्रेजुएटेड, मेरे साथ 7 और रिसर्चर्स थे जो मेटावर्स पे काम कर रहे थे, जो कि निगेट करते थे कि मेटावर्स इज जस्ट अ ट्रेंड. बट देन कहने की बात है, छोटी सी बात है कि इसको स्टार्ट करना है. कंस्ट्रक्टिव माइंड इसको अपने तरीके से लेके चलेगा, डिस्ट्रक्टिव माइंड इसको अपने तरीके से लेके चलेगा. ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस है, पेपॉल पेमेंट, बट देन अगेन यहाँ पे हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भी हैं, यहीं पाकिस्तान में भी, और वो सब भी कर रहे हैं जिस तरह कर रहे हैं, लेकिन हम पीछे नहीं रह सकते. True. It's not relevant to the, easy paisa is. True. All right, but True. please update your knowledge that that's not covered by State Bank of Pakistan. True. Yeah. So True. what is the point? I think as designers and developers, हम अगर अपने आप को यहाँ की restrictions के साथ ही लॉक कर देंगे, तो फिर हमारा तो फ्यूचर ख़त्म हो गया. So ऐसी possibilities हैं, ऐसी opportunities हैं, एक्सपेरिमेंट करना है. एक्सपेरिमेंट फेल भी हो जाए तो उससे सीखना है और आगे बढ़ते रहना है. सो आई ट्रस्ट के एक्सपेरिमेंट्स करते रहें. अगर वो टेक्नोलॉजी आगे फीजिबल नहीं भी है, कोई नई टेक्नोलॉजी उसमें से इमर्ज होगी जो कि आपको सपोर्ट करेगी.
ओके सो जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो 3D में हमारे पास कभी हम एक्सपीरियंस पाकिस्तान में है कोई इस तरह का सिलसिला, क्योंकि ज़्यादातर ये मेटावर्स तो ज़्यादा 2 डायमेंशनल लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं मैथमेटिशियन हूँ तो मैं डिफरेंट वे से देख रहा हूँ तो इस वजह से भी हमें इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा और ज़्यादा एस्केपिज्म उससे हम घबरा रहे हैं। तो अगर ये 3D हो जाएगा, फॉर एग्जांपल हमें ब्लैक होल में आना ना पड़ता लेकिन बैठे होते इधर, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? और ये जो हेडसेट लगाते हैं ना, इससे भी हम घबराते हैं, ठीक है, इसको छोटा कैसे किया जाए? इस पे बिल्कुल हेडसेट के सबको ही रिजर्वेशंस थे इसका। आपका जो समटाइम्स जो हेडसेट का वेट है वो आपका नो स्ट्रक्चर उस पर यू नो अलाइन नहीं है, समटाइम्स उसका वेट बहुत ज़्यादा है, समटाइम्स आपको वो बिल्कुल नॉजिया क्रिएट कर रहा है टाइम्स। देयर आर सेवरल इश्यूज यू नो अटैच टू दैट। यही वजह है कि आपको हेडसेट इतना मेन स्ट्रीम होता दिखा नहीं, जबकि ये तो बहुत पहले से टेक्नोलॉजी 12-15 साल हो चुके हैं ये टेक्नोलॉजी इन प्रैक्टिस है। सो दूसरा ये कि ये जो आपने क्वेश्चन किया है कि हम ऐसे कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप कर सकते हैं। आज से 5 साल पहले भी ये कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो आप हम सब यूज़ कर रहे हैं। हमारे फ़िल्टर्स जो स्नैपचैट के फ़िल्टर्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी इज़ पार्ट ऑफ योर सेल फ़ोन। आपको कोई भी चीज़ जो कि CGI जनरेटेड आपके ऊपर जो इम्पोज हो रही है, चाहे आपका चेहरा बदल रही है या आपको कोई नया इन्वायरमेंट दे रही है, दैट इज़ ऑल ऑगमेंटेड रियलिटी। एंड वर्चुअल रियलिटी इज़ समथिंग विच इज़ व्हेन यू इमर्स इनटू इट विदाउट द मीडिएटेड डिवाइस। तो आप जो ऑगमेंटेड रियलिटी उसमें आपको किसी स्क्रीन की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, वर्चुअल रियलिटी में आप खुद ही स्क्रीन के अंदर हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसको नाम दे के इस तरह से डिस्टिंग्विश नहीं करते, लेकिन हम सब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जनरेशन अल्फ़ा, मेरी बेटी यहाँ बैठी है, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इसमें तो उनके लिए ये बैरियर्स नहीं है, उनके लिए ये चीज़ें यू नो इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर देम और न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम। हमारे लिए अडॉप्शन डिफ़िकल्ट है। For me, when I tried headset on during the experiment, few people was showing reservation कि ये तो मुझे blind कर देगा. I don't want to be obstructed from reality, the existing reality. Why should I put this on? तो ऐसे रिएक्शंस थे, और गुड और बैड दोनों हैं। वेट के ऊपर काम हो रहा है ऐसे डिवाइसेस। आई थिंक एप्पल विजन इज़ वे बेटर देन द ऑक्यूलस, जिसके ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ऑक्यूलस 1, ऑक्यूलस 2 है जो कि शुरू में आए थे। एप्पल विजन इज़ वे बेटर। People have been wearing Apple Vision during driving as well. उसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं। XR जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जो कि इसके अलावा ऐड हो चुकी है। XR is failure. No, I'm sorry. I'll add here. XR is failure because after that, Washington had started. Sorry to add a little more. No, I'm so please sorry. go ahead. It's not offensive, but that's a failure. Let me tell you, about 1 week back, University of Washington has उसमें ये robotics technology में उन्हें पैसे ज़्यादा डालने पड़े because XR failure की तरफ चला गया है. Yeah. It's true. Metaverse भी जो है जितना उन्होंने क्या कहना चाहिए एक्सपेक्ट किया था उस लेवल तक नहीं गया। बट देन अगेन आई बिलीव इट्स सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड जो कि राइज करेगा, गिरेगा, राइज करेगा, फिर दोबारा गिरेगा। बट देन अगेन आई थिंक ये टेक्नोलॉजी जाने वाली नहीं है। आप इसके नए मीन्स ढूंढेंगे, नए यूज़ ढूंढेंगे। उसको आपने किस तरह कंस्ट्रक्टिव बनाना है, दैट्स अप टू यू। सो हमने तो एक टूल दे दिया, अगेन वो नाइफ आ गई है, आपने उसे सेफ काटना है, गला काटना है, दैट्स अप टू यू। तो टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट और हम उससे इंगेज कर रहे हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, XR, वर्चुअल रियलिटी, ये सब। लेकिन हम उसको उस तरह से लेबल नहीं करते, शायद से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बट इट्स प्रीटी मच हैपनिंग। इट्स बिन हियर फॉर अबाउट 20 years नाउ। तो any more question? Yes. I would like your opinion on this. A long time ago, जब पाकिस्तान में बिजली आई है तो गांव में लोगों ने कहा कि हम तो बिजली बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हमारे बच्चे मर जाएंगे, करंट लग जाएगी, दे विल डाई। राइट। फिर अल्टीमेटली पता नहीं किस तरह कन्विंस हो के हमारे यहाँ बिजली आ गई। अब कभी आती है कभी जाती है, लेकिन आ गई। आपके ख्याल से क्या वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी
आ जाएगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, या जिस तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट कर ली, या बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, नहीं एक्सेप्ट करेंगे? I think जैसे it's a funny question though. I say that change agents होते हैं हर सोसाइटी में, हर कल्चर में. चेंज एजेंट होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ओपिनियंस को. अगर आपका चेंज एजेंट इन्फॉर्म्ड है और वो एक ऐसी they have experimented, they've proven by it doesn't give you any damage, then people are more convinced to adopt to that technology. तो चेंज एजेंट हमारे कौन है और हमारे मोटिवेशंस क्या हैं, तो दैट मैटर्स. अगर आपने कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चेंज क्रिएट करना है, तो आपने किसी ऐसी फिगर के थ्रू आपने वो मैसेज कन्वे करना है कि जिसको लोग एक्सेप्ट करते हों, जिसके एक्सपीरियंस के थ्रू टेस्टिफाई हो जाए भाई कोई डर नहीं है, आप जा सकते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ वन एरिया. और जिस तरह हम चेंज एजेंट्स को यहाँ हमारे पॉलिटिकल चेंज एजेंट ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपके सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स, ये सब ये चेंज एजेंट्स ही हैं जो कि चेंज डायरेक्ट कर रहे हैं. एंड अगेन व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इज़ डायरेक्शन ऑफ चेंज. सो आई थिंक VR इज़ प्रिटी मच इन प्रैक्टिस. शायद एंटरटेनमेंट रीजंस के लिए हम उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको एजुकेशनली और फॉर अदर रीजंस एज वेल आप उसको विद इन द स्पेस, विद इन द गिवन स्पेस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, आई थिंक इसको ज़रूर अडॉप्ट करें और लेकर आएँ ताकि लोग उससे इंगेज करें एंड दे सी मोर पॉसिबिलिटीज़ अदर देन जस्ट एंटरटेनमेंट. Excuse ma'am, here on the left side. जी. Okay. मैम जब पहली मरतबा ये टॉपिक मेरी नज़र से गुजरा तो मैं इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे हजूम होगी, यहाँ पे मस्तियाँ होंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा, हमें भी जाना चाहिए और थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए. Right. बल्कि इसलिए मैं आया कि चलो पाकिस्तान में कुछ तो नया कोई कर रहा है. तो मैम क्या आपको नहीं लगता जैसे आप आर्टिस्ट है, कॉलेज में है, तो आप अकेले ही क्यों कर रही हैं? और यहाँ पे तो फिर स्टूडेंट्स का हुजूम होना चाहिए था, जो कि इंटरेस्टेड है, उन बच्चों को आपको इनवाइट कर लेना चाहिए था. एक तो ये कि लैक ऑफ ऑडियंस है, वाई. दूसरा ये कि आप ही ने क्यों ये सोच लिया कि इस तरह का सेमिनार अरेंज होना चाहिए. Right. और अगर आप चाहती भी हैं कि इसको जो है ना ग्रोथ मिले, ये आगे बढ़े, या पाकिस्तान में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी आए और हम डेवलपिंग नेशंस में से आए, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो मोहसिन नकवी जैसे लोग जो कि मेरिट पे नहीं है, वो हर एक हिस्से पे बैठे, उनका काम नहीं है, और अगर उनका काम है भी तो उनको नहीं चाहिए कि ऐसी चीज़ों पे भी जो है ना वो काम करें? That's it. राइट. स्टूडेंट्स क्यों नहीं है? मेरा सारा रिसर्च पे तकरीबन 100-200 जो रिस्पोंडेंट्स थे वो मेरे स्टूडेंट्स थे. ये सारी रिसर्च मैंने अपने स्टूडेंट्स पर ही एक्सपेरिमेंट की. वो बहुत इंथुजियास्टिक थे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस प्रोजेक्ट में. ये इसके अंदर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए मैंने भेजा, एक यूज़र ने मल्टीपल यूज़र्स को भेजा, 15-15, 20-20 यूज़र्स को भेजा, और देखा कि ओवरलोड होने के बाद इंटरनेट कैसे रिस्पॉन्ड करता है, हम लोड बेयर कर सकते हैं कि नहीं. यूजेबिलिटी चैलेंजेस सारे देखे. सो वो सारे आई बिलीव दे वर पार्ट ऑफ दिस रिसर्च एंड दे वर मोर देन ईगर टू टेक पार्ट इन इट. आई ऑल्सो टीच फॉर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट. बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो वर्चुअल स्पेसेस बनाना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर गेम्स बट फॉर ऑल्सो for such activities as well. So it's pretty much in practice. Nobody's left out. Don't worry about it. Secondly, I think it's the start at the moment कि आपको ये पता चला है कि आप इसको बगैर डिवाइस डिपेंडेंसी या VR हेडसेट भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो. तो ये नॉलेज शायद मैंने दी है, और इसके ऊपर जैसे ये काम करेंगे तो आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको काफ़ी सैचुरेशन नज़र आएगी. बट इन हियर आई थिंक आई एंगेज्ड अबाउट 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ इन दिस रिसर्च और स्टूडेंट्स को साथ एंगेज किया है. तो ये जो आपका एक ट्रेंड था उसको मैंने समझ लीजिए कि पूरे इख्तिताम तक पहुंचा दिया है. ओके. ये जो मेटावर्स की दुनिया है, सिमुलेटेड रियलिटी है, तो इससे रिलेटेड एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस भी है. तो आपका क्या ख्याल है
ये जो रियलिटी हमारी अपनी रियलिटी है, ये भी कोई सिमुलेटेड रियलिटी है? क्या हम भी किसी मैट्रिक्स में रह रहे हैं जिसमें हम Right. इस वक्त इंटरेक्शन कर रहे हैं? क्या ये सब कोई ड्रीम है? ये थोड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं ऑन्टोलॉजी के हवाले से। और Right. I'm not a philosopher, तो मैं नहीं कह सकती इसके ऊपर। मेरा ओपिनियन ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होगा, वो मेरा ही ओपिनियन है। So I think it's subjective. Being a realist, I would say there are no other realities. There's just physical reality. But जिस तरह इंटरनेट फॉर्म हुआ था और जब पहले ईमेल्स आए थे तो लोगों का ये ख्याल था कि पता नहीं कोई हायर सोर्स से हमें कोई कम्युनिकेट कर रहा है, कौन है। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के साथ इन्वॉल्व हैं। इंटरनेट गिव्स यू दिस फियर और sort of impression that there are other things, other universes operating. But I think from the scientific point of view, this is the reality, and this VR is actually not another reality. It's extension of your reality. आप यहीं होते हो, यही आपकी ज़िंदगी है, यही रियल है। आप उसको कुछ देर के लिए एक्सटेंड कर देते हो और फिर वापस आ जाते हो। तो it's like traveling. So आप पहले बटन्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, अब आप एवाटार के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो। तो it's not another reality. I would correct you in that. क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हमारी जो रियलिटी है वो किसी एलियन ने बनाई हो अपने कंप्यूटर में, जो कि शायद थोड़ा हायर डायमेंशंस का कंप्यूटर हो, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये रियलिटी है जिसे हम रियलिटी समझ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली किसी के कंप्यूटर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। मे बी हो सकता could है, be. हो सकता है। दिस कुड बी क्रिएटेड, दिस कुड बी एनीथिंग। ये आपके ऊपर है। आई लीव इट ओपन टू यू, आप उसको जैसे चाहें। ऑल्दो द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स वाज लॉन्च्ड, नॉट लॉन्च्ड, वाज क्रिएटेड इन अ नॉवल बेसिकली। स्नो क्रैश वो नॉवल था नील स्टीफनसन का, जो कि 80s में आया था। और उस नॉवल में जो वर्चुअल रियलिटी थी और जो ये एवाटार का कॉन्सेप्ट था, वो आई थिंक हमारे डेवलपर्स या साइंटिस्ट या जिन्होंने सुना पढ़ा उससे फैसिनेट होकर ये क्रिएट भी किया। और आज हम डेकेड्स आफ्टर हम ये देखते हैं कि ये चीज़ एक्चुअली रियलिटी कह लें बन गई। तो ये कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक आई वुड लीव इट ओपन टू द पर्सन टू एक्सेप्ट वट एवर दे थिंक इज रियल। मुश्किल क्वेश्चन फिलोसफी का, फ्री विल के हवाले से। जी तो बताइए। आपको लगता है कि ये मेटावर्स के अंदर यू हैव फ्री विल? Definitely, I think I believe I do have free will, but again मैं एक avatar form में हूँ। और मेरे कुछ metaverse developers थे, respondents जिनसे मैंने पूछा, तो उनका ये कहना था कि this metaverse actually gives me access to a life which is forever. तो मेरा avatar मेरे जाने के बाद भी रहेगा और वो interact करेगा, वो space में रहेगा। तो उनके लिए ये चीज़ बहुत fascinating है। So I think free will to an extent, how you define what free will is, but in that domain to a certain extent, I think जिस तरह interoperability आ गई है, जिस तरह आप interact कर सकते हैं, create कर सकते हैं, co-create कर सकते हैं, ये चीज़ें free will ही दे रही हैं आपको, पहले नहीं थी आपके पास। तो ये एक certain freedom आपको मिली है। ये अब आपके ऊपर है उसको positively use करें या negatively. So it depends on the users. But I thank everyone. Thank you for patiently waiting और इसमें participate करने का और आने का। In the coming days, अगर हमारे पास possibilities हुई, we can have some a seminar with panel discussion where you can have more panelists discussing what other possibilities and opportunities are there with regards to metaverse and fully immersive reality. Thank you. बहुत शुक्रिया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, मैंने सोचा अगर वो मिस हो गया तो वो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस जो है वो महरूम रह जाएगी। कैन मल्टीपल डेवलपर्स वर्क ऑन सेम मेटावर्स एट अ सेम टाइम? मल्टीपल डेवलपर्स होते हैं तभी कोई चीज़ क्रिएट होती है, सिंगल डेवलपर तो नहीं होता है ना ये। हाँ। मैंने लेवरेज किया है इस प्लेटफॉर्म को अपना विजुअल मर्चेंडाइज क्रिएट करने के लिए। मैंने मेटावर्स क्रिएट नहीं किया। तो मेटावर्स में मैंने एक कंटेंट क्रिएट किया है, मैंने एक इमर्सिव स्पेस को कस्टमाइज किया है एज पर माय प्रेफरेंसेस। मेटावर्स मैंने बनाया नहीं। तो क्वेश्चन भी शायद यही है, जो आपकी स्पेस है वहाँ पे, यानी दैट वो कोलैबोरेशन में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए। बिल्कुल। उनकी तरफ जाने से पहले एक मैं
ऐसे रैंडम से जहन में ख्याल आते हैं। इकोनॉमिक, ये जितने भी नए वेंचर्स या नए फ्रंटियर्स आ रहे हैं, इन सब के साथ ज़ाहिर है बहुत बड़ा आस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का। एक इकॉनमी इन्वॉल्व ना हो तो शायद ये हो ही ना। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी ताकत है ना इक्तसादी जो होती है। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में भी मेरे ख्याल है 3 साढ़े 3 महीने हो गए इंटरनेट की एक्सेस किन हालात में सबको पता है। मोबाइल डाटा डजंट वर्क, मैं रास्ते में होता हूँ, वॉइस नोट नहीं ओपन होगा, 5 केबी की फाइल, पिक्चर इमेज भी ओपन नहीं होगी। तो इट इज़ अ वेरी वरिंग कंसर्न। मैं चाहूँगा कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोचें कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ पे बैठे हैं। तो अगर हम ऑलरेडी सदियों पीछे हैं, तो आप हमें मज़ीद पीछे ना धकेलें। तो प्लीज़ बी काइंड टुवर्ड अस। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि अच्छा, एक सवाल अक्सर होता है, मैं आई वुड लाइक टू स्टील दिस अपॉर्चुनिटी, आई थिंक वी हैव टाइम। ऑडियंस कभी कम होती है, कभी नहीं। ये पूरा हॉल भर भी जाए ना तो कितने लोग हो जाएंगे? 50, 60, 80, 100, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। मैं अपने सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारी फेसबुक में मोर देन 50,000 फॉलोअर्स हैं। हमारे यूट्यूब में इस साल के अख्ताम तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1 लाख वहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। हमारा जो कंटेंट है उसमें कोई स्पाइसी चीज़ नहीं है, ना उसके अंदर कोई इंटरटेनमेंट है, ना शोबिज़ है, ना हम क्लिक बेट किस्म के थंबनेल्स बनाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा एकेडमिक, बड़ा गौर व फिक्र वाले होते हैं और हम मुकालमे को जन्म देते हैं। इसके बावजूद वहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ हैं मच मोर देन 1 करोड़ हैं अभी तक। और जो हमें ईमेल्स आती हैं, जो हमें कमेंट्स आते हैं, एक अच्छी ऑडियंस है जो हमें ऑनलाइन देख रही होती है। ख़वातीन अक्सर मुझे ये फीडबैक देती हैं कि हम आना चाहते हैं लेकिन आपके इवेंट्स देर से शुरू होते हैं और देर से ख़त्म होते हैं, हमारे लिए ट्रैवलिंग का में दुश्वारी होती है। अगर हम इसको पीछे करते हैं तो जो हमारी हजरात की ऑडियंस है वो कहती है कि हम यूनिवर्सिटी में या हम ऑफिस में। सो देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। प्लस पाकिस्तान और ये पिंडी इस्लामाबाद के हालात आपको पता ही है, रास्ते बंद हैं, कंटेनरिस्तान ये बना हुआ है। आप भी जिस तरह आई हैं तो ट्रैफिक में फंसी थी, तो इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल क्वाइट ऑफ्टन के आप यहाँ पे फिजिकली आए जब आपको ऑनलाइन मिल रही है। तो सो वी हैव गुड ऑडियंस। ऑफ कोर्स हम सब ये चाहते हैं कि ये फिजिकल यहाँ पे लोग भी आए, हमसे भी इंटरेक्ट करें, स्पीकर से भी इंटरेक्ट करें। लेकिन अगर वो ना भी हो तो देयर इज़ गुड ऑडियंस। प्लस हमने 1 रुपये का बजट नहीं लगाया कहीं अपने आप को मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए या बूस्ट करने के लिए। ये जितनी हमारी प्रोग्रेस है, ये हमारी, वो उर्दू में कहते हैं कि खुश्क सैरों तने शायर का लहू होता है, तब नज़र आती है एक मिसराए तर की सूरत। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू। तो जो हमारे दोस्त हैं मोर्ज़ाए फ़न की है खूने जिगर से नमूद, तो खूने जिगर हमें देना पड़ता है। मैं अपने सुनने वालों से, हाँ, मैं ये दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ आप लोग, अगर हम ये नहीं कहते लेकिन हम ख्वाहिश ज़रूर रखते हैं कि जहाँ इतना मटेरियल ऑनलाइन शेयर हो रहा होता है, आप फॉलो कर रहे होते हैं, घंटी के वो क्या कहते हैं, बेल आइकॉन पे प्रेस भी करते हैं, तो हमारे कहे बगैर भी कर लें। हाँ, हम मोहब्बत मांग के तो नहीं ना लेंगे, आप दे दें हमें। बाकी ये हमारे जो दोस्त है वो भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट करने के लिए, यहाँ जो आज जितनी भी परसेंटेज ऑडियंस की है, ये विजनरीज़ हैं, अर्ली अडॉप्टर्स हैं। तो विजनरीज़ और अर्ली अडॉप्टर्स होते ही बहुत थोड़ी परसेंटेज में पूरी सोसाइटी में। तो ये जो थोड़ी परसेंटेज है, यही आपको लेके चलेगी अर्ली मेजॉरिटी तक और मेन स्ट्रीम तक। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं ये सब। दे आर ऑल्सो चेंज मेकर्स, दे आर ऑल्सो चेंज एजेंट्स अपनी अपनी डोमेन्स में। तो ये कोई मामूली ऑडियंस नहीं है, ये बहुत बड़ी ऑडियंस है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Assalamu alaikum, ma'am. जी। Ma'am, as you said, there are some people who have bought land in the virtual world. So the question is, since there is no restriction on creating a land in the virtual world, like creators can create land again and again, so how does it make sense to pay for a thing that is gonna lose its value in a very short period of time?
आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, मेरी डोमेन से थोड़ा बाहर है, लेकिन मेटावर्स जो लैंड सेलर्स हैं उन्होंने मेटावर्स लैंड की प्राइसेस इतनी हाई रखी हैं कि आप वो बहुत कम जो हैं बायर्स हैं उनके साथ वो इंगेज कर सकते हैं। और आई थिंक इट्स ओनली टिल नाउ आई थिंक कि वो जो लैंड बाय करने का जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उस तरह हाइप पर नहीं गया। देयर ओनली लिमिटेड लैंड्स विच हैव बीन बॉट इन द वर्चुअल वर्ल्ड, और वो आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन है, ये ट्रेंड आएगा जाएगा चला जाएगा, उसको देखते हैं। तो आई मे नॉट बी द एग्जैक्ट पर्सन टू डायरेक्ट दिस क्वेश्चन टू, पर हो सकता है हमें ऑनलाइन इसका कोई रिस्पॉन्स मिले। तो थैंक यू। अगेन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्या फ़ायदा आपने घर ख़रीद लिया, उसमें बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, क्या फ़ायदा आपने गाड़ी ख़रीद ली लेकिन उसका लाइसेंस आपके पास नहीं है, उसमें पेट्रोल नहीं है। तो कौन ऐसा है जो आप जैसे इनिशिएटिव जो लेते हैं उन लोगों को सपोर्ट करे? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दिस? स्टेक होल्डर्स कौन? मेटावर्स डेवलपर्स हैं जो मेटावर्स ओन करते हैं, और ब्लॉकचेन के थ्रू आपको ये आपको अपना एक ब्लॉकचेन लाइसेंस आप कह लें मिल जाता है, जो कि आपका ये प्रूफ होता है दैट यू ओन दिस एसेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस। तो वो आपके लिए वो ट्रेसेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड। और क्योंकि हम अभी इकोनॉमिक्स इश्यूज़ की वजह से या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो कि सब जानते हैं, तो हम काम कर रहे हैं, काम करना है हमने और करते रहना है। लेकिन ये लिमिटेशंस आपके साथ हैं, और आप यू आर कंसिडरिंग, अभी एक मैं कहती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि आपने हमेशा पाकिस्तान में ही रहना है, आप समझ रहे हैं हमेशा हालात ऐसे ही रहेंगे। तो जो विजनरीज होते हैं या जो फ्यूचर या जो क्रिएट करते हैं या जो इनोवेटर्स होते हैं ना, वो आज से 10 साल आगे का सोच रहे होते हैं और आज से 10 साल आगे में काम कर रहे होते हैं। सो ये विद दैट स्पिरिट आई बिलीव keep going, and you will find like-minded people, you will find your tribe, and ये लोग दुनिया में हर जगह हैं। पहला जिसने स्टार्ट किया होता है वो हमेशा अकेला ही होता है, but they lead, right? जी शुक्रिया मैडम, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया मेटावर्स के बारे में। मैं मेरे ख्याल में काफ़ी सीनियर भी हूँ यहाँ बाकी लोगों से, और थोड़ा सा सरप्राइज़ भी होगा। आप, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर एजाज अहमद राजा मेरा नाम है, और मैं शायद सबसे दूर से आया हूँ, मीडिया टाउन रावलपिंडी से मैं आया हूँ। और मैं आजकल रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, और ये यूट्यूब की वजह से चीज़ें देख रहा होता हूँ। मुझे भी आइडिया था इन चीज़ों का, जिस तरह मैडम ने कहा, बहुत सारी चीज़ें पहले से लोगों को आजकल घर पे मिल जाती हैं, पता होता है। सवाल ये है कि ये जो चीज़ें ड्राइव होती हैं इकोनॉमिक्स से, और इसके अंदर डेफिनेटली आजकल जो है वो चल रहा है दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसने शायद इस मेटावर्स को बैक बर्नर पे डाल दिया है, और सुनने में पहले आ रहा था कि बड़ी इकानमी है इसके अंदर, $12 ट्रिलियन की इकॉनमी इसमें होगी, हर चीज़ आप परचेज़ करेंगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि यहाँ ब्लॉकचेन अलाउड ही नहीं है, जैसे मैडम ने बताया कि स्टेट बैंक की तरफ से ये हमारी ये क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस नहीं जी जी, ये हकीकत है। तो ये जो चीज़ है, ये देखें, ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए। हमारे नेबरहुड में इंडिया है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और बदकिस्मती से हम भीख तो मांगने में सबसे आगे खड़े होते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें, इंटरनेट बंद करके हमारी इकानमी का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इंटरनेट से ड्रिवन है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, हमारे पास इतनी एवेन्यूज़ हैं, ब्रेन्स हैं, ये यंग टैलेंट है, अल्फ़ा जनरेशन है, इनका फ्यूचर है। हमारी हुकूमत को बिल्कुल टस से मस नहीं हो रही। मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से परवेज़ ऊद भाई का शुक्रिया अदा करूँगा, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ उनसे। और यहाँ पे मैं आया, ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम मेरा आज आपका लेक्चर में सुनने आया हूँ। लेकिन ये मैं घर से बैठ के, उनका एक आइडिया है कि हर टाउन में ब्लैक होल बनाएं, लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग इस तरफ आ नहीं रहे। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे ये कितना एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसकी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती जब तक आप इसकी पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, ब्लॉकचेन को आप अलाउ नहीं करेंगे। आप पेमेंट, चूँकि आपने कोई भी एसेट परचेज़ करना है तो उसके लिए क्रिप्टो करेंसी का
रेगुलेशन ही नहीं है। डेफिनेटली इसके ऊपर ज़रूर काम होना चाहिए और आई थिंक दे one must have a separate ministry that is managing these science and technology related concerns. ये मैं मेटावर्स को सिर्फ नहीं कहूँगी जो मैंने आज बात कही है, मैं वर्चुअल रियलिटी की बात कहूँगी, इमर्सिव रियलिटी की बात कहूँगी। वो है, वो रहेगा, वो हम भी एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे हम सिनेमा में जाके एक्सपीरियंस करें या हम किसी गेम हाउस में जाके एक्सपीरियंस करें, हम करते हैं। उसके हमने यूसेज और देखनी है और क्रिएटिव यूसेज देखनी है और प्रोडक्टिव यूसेज देखनी है और वो आपकी हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको कैसे और डायनामिक और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आई थिंक दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। और जी Hello, I am Ahmed Masood, 9th class student. Thank you for your presentation. Does this have future? Because like electricity and internet, the new चीज़ें थी वो हमारे लिए, लेकिन अब हमारी नीड है। ये हमारी नीड बनेगी। हम बैक इन द डे हम गूगल क्लासरूम को क्वेश्चन करते थे कि कौन इंटरनेट पे क्लासरूम लेगा। हम तो फिज़िकली जाने के आदी हैं, राइट? हम रिमोटली काम करने को क्वेश्चन करते थे, हम सब करते हैं, ठीक है। सो ये पैंडमिक की वजह से जो एक ग्लोबल चेंज आया है उसकी वजह से ये चीज़ें एक्सेलरेट हुई हैं और ये चीज़ें हाइप पे भी आई हैं और फिर उसके बाद हाइप ख़त्म भी हुई है, रिड्यूस भी हुई है। बट फ्यूचर, जो एक चीज़ जो पैंडमिक ने हमें बताई है वो ये है, फ्यूचर इज़ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर इज़ थ्रू इंटरनेट, फ्यूचर इज़ थ्रू कम्युनिकेशन। तो जब ये चीज़ें हैं तो उसकी एड के लिए ये टूल्स भी हमें चाहिए होंगे। तो दिस इज़ हेयर, दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बिन पार्ट ऑफ आवर क्या कहना चाहिए, डेली यूज़। लेकिन आप उसको मेटावर्स का नाम दें, इमर्सिव वर्ल्ड का नाम दें, वो कोई भी नाम दें, लेकिन आपका कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट हमेशा लाइव रहेगा। आई बिलीव पैंडमिक के थ्रू ये वाहिद इंडस्ट्री है जो कि थ्राइव की है। सो दैट इज़ अ प्रूफ दैट दिस इंडस्ट्री इज़ बाउंड टू इन्फ्लुएंस अदर इंडस्ट्रीज एज वेल। थैंक यू। ये बहुत लेट पहुंचा है, मतलब बाकी दुनिया से, तो एक्सेप्ट करेंगे लोग? आई बिलीव दिस इज़ नॉट लेट। आपका थोड़ा आई थिंक आपका यूजेज या आपका जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतना इंटीग्रेटेड नहीं है ये चीज़ें। बट जो आप in the modern schools, in modern education, ये टेक्नोलॉजी सारी इंटीग्रेटेड है, ये सब बहुत नॉर्मल है और दिस इज़ नॉट लेट। आई बिलीव इट्स जस्ट दैट यूर अडॉप्टिंग, यूर एट द कर्व वेयर आपकी अडॉप्शन इसी टाइम पे होनी थी। तो आई एम ग्लैड यूर वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स इन योर रीजन। तो ज़रूर इसको इसको ट्राई करें। आई वुडंट से एक्सेप्ट करें, एक्सपीरियंस करें, और अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो ज़रूर बताएं ताकि हम उससे लर्न करें और उन ऑब्स्टिकल्स को हम ओवरकम करने की कोशिश करें।